इसी बीच आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के 5 नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि सीजेआई चंद्रचूड़ यहां पर सभी को शपथ दिलवाते हुए नजर आ रहे हैं। सीधी तस्वीरें देखिए। Without fear or favor, affection or ill will. Perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will. And that I will uphold the Constitution and the laws. That I will uphold the Constitution and the laws. पांच नए जजों को शपथ दिला रहे हैं सीजेआई। सुप्रीम कोर्ट के नए जजों का शपथ ग्रहण समारोह यहां पर जारी है। आपको बता दें सीजेआई दिला रहे हैं नए जजों को शपथ, और आपको बता दें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शपथ दिला रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह का ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। आज नए 5 जज नियुक्त हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर शपथ दिलाने के बाद सीजेआई ने हाथ भी मिलाया है उनसे, और ये कार्यक्रम फिलहाल जारी है, जहाँ 5 नए जजों को शपथ दिलाकर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति दिलाई जा रही है। Of Honorable Sri Justice Sanjay Karol reads as under: By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Sri Justice Sanjay Karol, Chief Justice of the Patna High Court, to be a judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office, given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 4th day of February in the year 2023, 15th Magha, 1944 Shaka, in the 74th year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Sri Justice Sanjay Karol to take oath. I, Sanjay Karol, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. तो देखिए आप तस्वीरें भी देख रहे हैं। बता दें कि करीब 2 महीने तक केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच चली तनातनी के बाद 5 जजों के नामों को मंजूरी दे दी गई है। केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति भवन से भी इनकी नियुक्ति का आदेश भी जारी हो गया है, और अब आज ये 5 जज शपथ ले रहे हैं। आपको बता दें कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इन 5 जजों को आज शपथ दिलवा रहे हैं। आपको बता दें कि 5 नाम जिन्हें मंजूरी दी गई है, उनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल जिन्होंने अभी शपथ ली है, और 3 जज शामिल हैं। Puliguru Venkata Sanjay Kumar reads as under: By virtue of the power vested in me by Clause 2 of Article 124 of the Constitution of India, I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Sri Justice Puliguru Venkata Sanjay Kumar, Chief Justice of the Manipur High Court, to be a judge of the Supreme Court of India with effect from the date he assumes charge of his office, given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 4th day of February
in the year 2023, 15th Magha, 1944 Shaka, in the 74th year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Chief Justice Puliguru Venkata Sanjay Kumar to take oath. I, I, Puliguru Venkata Sanjay Kumar, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. पीवी संजय कुमार ने अब सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर यहाँ शपथ ली है, उनको शपथ दिलवाई है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने। और आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट के नए 5 जजों का यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, जिसमें अभी आपने सुना मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार को, जिन्होंने अब शपथ ले ली है। अब वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन चुके हैं। इसके बाद अभी आप देखेंगे पटना हाई कोर्ट के जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का भी नाम शामिल है इन 5 जजेस की लिस्ट के अंदर, जिनको आज शपथ दिलवाई जा रही है, जिनकी आज नियुक्ति हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर। और ये तस्वीरें फ़िलहाल आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से लाइव। I, Draupadi Murmu, President of India, do hereby appoint Shri Justice Ehsanuddin Amanullah, Judge of the Patna High Court, to be a Judge of the Supreme Court of India, with effect from the date he assumes charge of his office. Given at Rashtrapati Bhavan, New Delhi, this 4th day of February in the year 2023, 15th Magha, 1944 Shaka, in the 74th year of the Republic of India. Signed, President of India. May I now request Honorable Chief Justice Ehsanuddin Amanullah to take oath. I, Ehsanuddin Amanullah, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, having been appointed a judge of the Supreme Court of India, do solemnly affirm do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. तो देखिए ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से लाइव आप देख रहे हैं, जहां आज 5 नए जजेस की नियुक्ति के बाद कुल संख्या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की 34 हो गई।